problem related to the equations, and then we'll discuss another topic from this chapter. Today we will do only numerical because the main thing is numerical in physics. If you know how to solve the physics numerical, then that is good. So come to the numerical part, and the first question I am taking here. Today there is only numerical. Before to numerical, I am writing here the first equation of motion B equal u plus at s equal ut plus half at square and v square equal u square plus 2as. There are three equations of motion. One is v equal u plus at. The second one is s equal ut plus half at square, and third one is v square equal u square plus 2as. इसको इधर लिखते हैं. V square equal u square plus 2a. These three equations, and all these three equations are for motion, accelerated motion, not the retardation. Because till we have discussed with you only for the accelerated motion. All the equations are written for the accelerated motion, means the velocity of the object is increasing. So the problems which I will take you today, numerical problem will be based only for the accelerated motion. Means initial velocity will be less and final velocity will be greater. Keep in mind this point. So come to the first point, and the first question is calculate the one question is also acceleration is v minus u upon t. ये भी एक फॉर्मूला था. Acceleration is change in velocity upon time interval. Now the question is calculate the acceleration of the car starting from rest with attain a velocity of 30 meter per second in 0.5 hour. देखो 30 meter per second in 0.05 hours. ठीक है? From rest. क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा. क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि उस कार का एक्सीलरेशन फाइंड करो. उस कार का एक्सीलरेशन फाइंड करो जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है. मतलब कार खड़ी है अपने पोजीशन पे, उसके बाद स्टार्ट हुई है. स्टार्ट होने के बाद 0.05 आवर्स में कार की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हुआ है. ठीक है? मतलब कार हैज गेट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट in 0.05 hours. Then what is the acceleration of that object? तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन क्लियर है कि वेलोसिटी कार की इंक्रीज हुई है, मींस एक्सीलरेटेड मोशन है. So definitely there is a one equation which you will apply from these three equation here. इनमें से कोई एक इक्वेशन अप्लाई करोगे जो आपको दिया होगा. ठीक है? हाउ मेनी सर श्रीवास्तव आए? v minus yes v minus u upon t. ठीक है? ठीक. आर यू गुड? तो a equal v minus u upon t. a equal v minus u upon t.
But what is the meaning of rest? Meaning of rest means the initial velocity is 0. So you will put here u equal 0, but the problem is here the time is given in hours and speed is given in meter per second. And you know, whenever you are going to solve the problem, then we should solve in MKS system. So here this is in MKS system, already speed is given in meter per second, but the time is given in hours. We have to convert into second. Who will tell me ki how much second in 1 hour? In 1 hour, how much second? 3600. So just multiply 0.05. This one will become 0.05 into 3600. बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 180 सेकेंड. 180 सेकेंड. मल्टीप्लाई क्लियर है ना? That is right. Yes. Now put here. V is 30 divide minus 0 divided by 180. And in 30 divided by 180. So this is equal to 30 upon 180. This one is cancelled out, 0 0, and 3 6 is 18, 1 upon 6. 3 6 is 18, 1 upon 6. This is the answer, meter per second square, not the meter per second square, because the unit of the acceleration is meter per second square. So 1 upon 6 meter per second square. Okay, students, so note down everyone. अच्छा हो भी गया, काफी फास्ट हो बेटा आप लोग, क्वेश्चन के साथ साथ नोट भी कर लेते हो. Come to the next question. Question number 2. Keep in mind that today we are discussing only for the accelerated motion. Okay? See. The next question is, a body starts with initial velocity of 20 meter per second. Initial velocity of 20 meter per second. A body, question ध्यान से सुनना. A body starts with initial, yes, u 20 meter per second, and acceleration 5 meter per second square. 5 meter per second square. Find the distance covered. Find the distance covered in 5 seconds. Question is clear? A body starts with initial velocity 20 meter per second and acceleration 5 meter per second square. Then you have to calculate the distance covered by that body in 5 seconds. Now what are given, see here. One thing is initial velocity u is given, and the second one is acceleration is given, and the third one is t is given. And how many equation you have? You have v equal u plus 18. But here v is not given. देखो कैसे चेक करते हैं बेटा? v equal u plus 80 is, this is the first equation, but the final velocity is not given.
So you will not apply this question equation because we have to find the distance. We have to find the distance and there is no distance in this equation. Now the second one is S equal ut plus half a t square. This is the distance covered. Initial velocity is given, time is given, acceleration is given, time is given. So definitely we can apply this equation. See, v square equal u square plus 2as. This in this equation, as distance is also given, but the final velocity is not given, so you will not apply directly this formula because here the time is also not given. So the single equation second will be applicable to find the distance covered by that body. So everyone apply this equation to find the distance covered in 5 seconds. Do fast. S equal ut plus half a t square. S equal ut plus half a t square. Now the S is u is 20, t is 5 plus 1 by 2, a is 5, is 5 square. Princy Verma, just do the solution. Equation has been confirmed. Second equation is applicable. So find the solution. Put the value here. 25 जा 100 and plus देखो बेटा यहाँ पे 5 जा 25 और 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया सॉरी हाँ 5 टाइम है ना तो 25 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 125 125 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 62.5 62.5 I am writing directly here so this one will become 162.5 and the answer is in meter because you have find the answer is in meter. Now the next question रब कर दे बेटा हैव यू रिटन question next question and I will not give you any hint into you you will solve this question a body starts from rest क्वेश्चन केवल शॉर्ट में दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो a body starts from rest and acquire a velocity 10 meter per second and acquire a velocity 10 meter per second
in 2 seconds. In 2 seconds. 2 seconds. Find acceleration. Question clear है? A body starts from rest and acquire velocity 10 meter per second. Find acceleration. ms स्क्वायर नहीं बोलते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर। हाँ, तो a इक्वल v माइनस u अपॉन t। फाइनल वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट हैज स्क्वायर्ड 10 माइनस u 0 divided by 2, 10 by 2 equal 5 meter per second square. This is your answer. और कोई क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो तुम्हें मिल जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। A vehicle is accelerating on state road, मतलब एक व्हीकल जो है स्टेट रोड पे मूव कर रही है। Its velocity at any instant is 30 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी है। क्वेश्चन है कि a vehicle is moving, a vehicle is accelerating on a state road at any time, the velocity of that is 30 kilometer per hour. After 2 seconds, after 2 second, it is 33.6 kilometer per hour। ठीक है। And further after 2 seconds, and further after 2 seconds, its velocity is 37.2 kilometer per hour. The question is find the acceleration of the vehicle in the SI unit. Is the acceleration uniform? क्वेश्चन दो देखो, पहले किसी भी टाइम इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर था, 2 सेकेंड में इसका स्पीड इतना हो गया। इसके बाद फिर 2 सेकेंड के बाद इसका स्पीड इतना हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये भी पूछ रहा है कि इज द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। क्लियर? तो डू दिस क्वेश्चन। देखो पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू चेक इट इज यूनिफॉर्म और नॉट। यूनिफॉर्म means its acceleration should be same. So first of all find the acceleration for these two velocity, initial velocity, final velocity, but it is given in kilometer per hour, so convert into meter per second, this one and this one, and then v minus u divide by 2, you will find first acceleration। अगेन v माइनस u, इसको v कंसीडर करोगे, इसको u कंसीडर करोगे और डिवाइड बाय 2,
फिर एक्सेलरेशन फाइंड करोगे एंड इन बोथ केसेस if the acceleration comes equal then the acceleration is uniform. So first of all, to solve this question, convert these two into meter per second. And you know how to convert? Yesterday I have told you if it is given 30 kilometer per hour, then how will you convert into meter per second? 30 into 5 upon 8. 5 upon 8. ठीक है? Akansha Singh has also calculated. Good. So this is 150 upon 8 meter per second. So acceleration is, और इसका भी तो भी करना है ना बेटा, 33.6 किलोमीटर पर आवर इक्वल 33.6 into 5 upon 80. ये कितना आ रहा है? 5 से 15 3 18 और 5 से 168 upon 18. ठीक है? ये एक और बचा है, इसको भी एक साथ कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 37.2 किलोमीटर पर 37.2 किलोमीटर पर आवर इक्वल 37.2 into 5 upon, तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 7 जा 35 और कैरी 1 36, ठीक है? कैरी 3 और 5 3 जा 15 और 3 50, 186 upon 80 meter per second. All the velocity I have converted into meter per second. This is first velocity और second, ये third है. So first of all find the acceleration for these two. So for these two, A equal 168 upon 18 minus 150 upon 18 divided by 2. Note down students so that I can rub it. नोट कर लो ताकि हम रब करें. Done. Here A equal 168 minus 50 कितना आ गया? 18 divided by 18 divided by 2. ये तो पूरा कट गया बेटा, 1 आ गया, 1 by 2 equal 0.5. A equal 0.5 मीटर पर सेकेंड हुआ. ये तो फर्स्ट एक्सेलरेशन हो गया, फिर वो फर्स्ट वेलोसिटी से जब इंक्रीज किया था, उसके बाद से निकालेंगे सेकेंड. रब कर दें. Now, for the second case, A equal 186 upon 18 minus
बेटा दूसरा कितना था 168 168 upon 18 divided by, so here is again 16 में से 8 गया और 7 में से 18 divided by 18 divided by 2, so 1 by 2 equals 0.5 meter per second square. So you can see here the acceleration is uniform. In both the cases, acceleration is 0.5 meter per second square. So this acceleration is uniform. Who will tell me what is average speed? Anyone? Anyone? Average speed? कोई who is telling? Total distance upon total. Yes. So this next question is from average speed. Car moves. Question number 5. Uh, a car moves 30 kilometer in 0.5 hours. And next 30 kilometer in 2/3 hours. Okay? Find the average speed. Average speed. Average speed आपको find करनी. So you know very simple, average speed is total distance upon total time taken. But one thing see here, there is no need to convert into meter per second. Why it is? Why I am telling you? Because see देखो ये भी किलोमीटर पर किलोमीटर आवर्स पे दे रखा है, ये भी किलोमीटर और आवर्स में दे रखा है. So simply you can tell the answer in kilometer per hour. So just sum the total distance and the total time. Because question में पहले क्या बोला है कि first he has covered 30 kilometer in 0.5 hours and then next 30 kilometer into upon 3 hours. So what is his average speed? So just sum up the distance and divide the sum of total time. You will get the average speed. So what is the average speed? If someone has calculated, anyone? Okay. An object covered 30 kilometer in 0.5 hours. Clear? And next 30 kilometer in 2/3 hours. Find the average speed of that object. मतलब पहले 30 किलोमीटर 0.5 आवर्स में कवर करता है, फिर आगे का 30 किलोमीटर 2/3 आवर्स में कवर करता है. तो आपको इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना. क्वेश्चन ऐसे देखो, पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये दिस वन इज द 30 किलोमीटर, ठीक है, एंड टाइम इज 0.5 आवर. Again, this distance is 30 kilometer and the time is 2/3 hours. अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज कितना आएगा. सम ऑफ द डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. यस आदिति, यू आर टेलिंग द आंसर.
Who has given answer calculated, please tell me. 51.4 kilometer per hour. This is the right answer. सबका यही आ रहा है, सेम आ रहा है. अगर सबका आंसर 51.4 आएगा बिल्कुल सही है. 30 अब यहाँ पे हम करने, यस 51.42. चलो इसको हम यहाँ से रब करते हैं और आपका आंसर चेक करते हैं. 51.42 लगभग बच्चों के आ रहे हैं, तो दैट वे बी करेक्ट. तो एवरेज स्पीड इक्वल 30 plus 30 divided by 0.5 plus 2 by 3. सीधा सीधा इसको रखा है. तो दिस इज 60 और जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 3.35 या 15 1.5 और प्लस 2 3.5 डिवाइडेड बाई, देखो 3.35 या 15 पॉइंट यहाँ लगेगा और प्लस 2 इसमें ऐड करोगे, ये 3.5 हो जाएगा. 3.5 अपॉन 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3.5. अब इस पॉइंट के लिए यहाँ पे एक जीरो कैरी कर लेना. ये आपको मिल जाएगा 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 35. अब 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36. ये मिल जाएगा इक्वल 360 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5 7 जा 35. हाँ 51.4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है बेटा, टाइम भी लगभग आपको ओवर हो चुका है, तो नोट डाउन. और बाकी चीजें हम इसके आगे करेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीक. नोट कर लो. थैंक यू मैम.